अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। सॉरी, मैं आपकी जो कनाडा कनाडा की विजिट थी उसके बाद जलसे में ज़रा मसरूफ़ हो गया। तो अल्लाह के फजल से आपने देखा होगा जो क्लिप्स मैंने भेजी थी, अल्लाह के फजल से जलसा बहुत ही कामयाब रहा है। मौसम ज़रा ख़राब हो गया था आखिरी दिन पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हाज़िरी थी और इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था। तो अपडेट दुनिया के जो डेवलपमेंट उसके बारे में आपने कहा था। सो ब्रीफली शुरू करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चल रही है वो तो यूक्रेन रशियन वॉर है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इट्स क्वाइट क्लियर कि रशिया इज विनिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो जो यूक्रेन की ऑफेंसिव स्प्रिंग या समर ऑफेंसिव नेटो ने प्लान की थी वो तो बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, बिल्कुल फेल हो गई है। और नेटो ने भी कह दिया है कि एमिनेशन वगैरह की अभी कमी हो गई है और इट्स अ रियल प्रॉब्लम। सो मीनवाइल रशिया अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहा है। तो वो आपने देखा होगा कि ड्रोन अटैक जब रशिया में हुआ था विच वाज अ माइनर इरिटेंट फॉर रशिया, लेकिन प्रेसिडेंट प्यूटिन ने ग्रेन डील बंद कर दी और वो एक किस्म की पनिशमेंट ज्यादातर यूरोपियंस को मिली थी, क्योंकि 80% ऑफ द ग्रेन वाज रियली बीइंग डिलीवर्ड टू यूरोपियन कम्युनिटी। तो गरीब मुल्कों को थोड़ा मिलता था। तो उसके बाद बहुत शोर मचा के वो लुक व्हाट ही हैज डन, ही इज गोइंग टू स्टॉप द वर्ल्ड एक्सेट्रा। लेकिन प्यूटिन ने बहुत अच्छी चाल कहे या उसका ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट देखे। he gave decided to give free grain to African countries और उनके जो लोन्स वगैरह भी थे अप टू 23 बिलियन जो है ना माफ कर दिए। सो आई थिंक ही इज डूइंग हिज बेस्ट टू ट्राई टू हेल्प अफ्रीका। और उसके साथ साथ अफ्रीका में भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रही है। पहले आपने देखा होगा कि माली ने जो है ना फ्रेंच ट्रूप्स को निकाल दिया था और that caused a big fuss for the French। और फिर बुर्किना फासो में नया प्रेसिडेंट आया, वहां भी कू हुआ और उसने भी जो है ना रशियन साइड पे काफी इंटरेस्ट शो की है। और मोर रिसेंटली नाइजर में कू हुआ और उनने भी बहुत ही सपोर्ट रशिया और प्यूटिन को दिखाया है। और जो प्रिगोजिन जो है वागनर ग्रुप का जो लीडर है वो भी जा रहा है अफ्रीका में उनकी हेल्प करने के लिए। सो यू कैन सी दैट many new leaders of Africa fed up with the whole colonial mentality। क्योंकि नाइजर में देखे ना जो यूरेनियम फ्रांस को मिल रहा था, 80% ऑफ द यूरेनियम इज obtained फ्रॉम नाइजर। और वो जो उसकी जो मार्केट कीमत है इज अराउंड $280 उसमें से सिर्फ $11 नाइजर को जाते थे। कैन यू बिलीव इट? सो रेस्ट ऑफ द मनी वेंट टोटली टू फ्रेंच कंपनीज एक्सेट्रा। और इसी तरह ये बेचारे जो है ना अफ्रीकन कंट्रीज लीश पे रखे हुए थे यूरोपियंस ने, स्पेशली फ्रेंच ने, कि ऑल देयर एसेट्स वर इन देयर बैंक्स और लोन्स वगैरह सब कुछ एड के जरिए बस उन्हें चला रहे थे। एंड दैट वाज रियली अ नास्टी way of for a country to exist। So slowly and steadily अभी young leaders कहना शुरू हो गए हैं कि enough is enough, we haven't really got our independence and we want proper independence। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अफ्रीका is becoming a battleground between the West and Russia and China। So we will see what happens there। तो बाकी दूसरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है इज रिलेशन टू ब्रिक्स और इंडिया का जो रोल है। मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया को काफी कोशिश अमेरिकन कैंप कर रहा है टू ड्रॉ देम टुवर्ड्स द वेस्टर्न कैंप। तो मोदी साहब की विजिट जो पीछे जो अमेरिका की हुई थी इंडिया के लिए काफी फायदेमंद हुई है। सो क्लियरली हैज डन सम डील्स विद द अमेरिकन लॉबी एंड आफ्टर दैट India has basically stopped the movement towards a BRICS currency, क्योंकि बहुत शोर मचा हुआ था last few months कि by August the BRICS will announce a currency backed by gold or other commodities as well। तो ये जो है ना India has said clearly कि no, Russia won't be happy because they wanted to introduce the BRICS currency and the Chinese to some extent as well।
Again, Chinese were more interested in expanding the BRICS group as well, or just there were about 40 countries wanting to join, including Iran, Saudi Arabia, Indonesia, Algeria, Argentina, Mexico, and many others. So India ने कह दिया कि no, they do not want expansion. They certainly don't want to support it because they think China will gain more through expansion. और खास तौर पर उनने जो है ना सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया का ज्वाइन करने का इतराज किया. And these are two very, very important economies to join BRICS if that's allowed. So अभी देखते हैं क्या होता है, because if India tries to double cross the Russians and Chinese, I think they will pay a heavy price. On the other hand, if the Indians are very clever and they can milk both camps, so देखा जाएगा. It's very interesting times from that point of view. So Taiwan वगैरह का तो शोर मचाते ही रहते हैं, लेकिन China definitely does not want a war and does not need a war to get Taiwan. So I don't think that will happen. So we will see what's happening. Economically, though, the dollar is struggling and the British economy is struggling, as is the American economy. And the Chinese economy is going from strength to strength, as is the Russian economy. And interestingly, the Indian economy is doing really well. So sadly, Pakistan ki situation to kafi buri hai. Still no improvements. In fact, things seem to be getting worse and worse. The Iranians clearly are making headway. They've got the respect of both China and Russia, and I think their membership of the BRICS will be fast-tracked because India ki bhi support hai Iran ko. So as far as the other countries go, we will have to see. So, politically, the world is in a real mess. Even the Americans, you can see what they're doing to Trump. Or, Biden ke bete ke jo masle aage aa rahe hain, they're dreadfully shocking, really. Like, usko both protection de rahe hain, Biden, White House, or generally the liberal establishment. So, we will just have to see how that goes. Otherwise, I don't think there is anything that much more interesting. Turkey is still trying to decide exactly what to do. They're trying to keep Russia happy and the Western camp happy. So that will be interesting. Like, and at the moment, India is taking big gambles. So we will see where that takes us. So until next time, Assalamu alaikum.